Hello coders, welcome to Dr. Codecraft where we turns logic into reality. If you are starting your Python journey, then today's topic is a super important variables in Python. So don't worry, I will make it simple and practical. Let's understand what is the variable in Python. So we take a real-time example. Suppose that if we want to store some items, so that we need a kind of box and storage to keep them item. Okay, so we need a box, or we can say we need any container. Suppose that we want to store our books, then we need a shelf to store our books. So in real time example, we can store our books in the shelf. So we need a container, or we need a variable to keep data or to store data inside it. Okay, so variable is a kind of storage. In the real time example, we see here x equals to 100. X is our variable name and 100 is its value. Here in a box we store a 100. So here x is a variable which store 100, and 100 is a number which is a numerical value. In this example, equal sign is used when x equals to 100. Here equal is does not equals to, it represent here assignment, which means 100 is assigned to x, which means x is stored 100. So x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 100. So a variable is a container that is used to store a data. So in a Python, to declare an variable is a very simple. In other language, if we want to declare a variable, we use the data type. Suppose that here I want to declare a. A is the integer type. Okay. If I want to declare float value, then other programming language I use to data type first, then write the variable name, then write the value. Okay, but in Python we directly write the variable name, like x equals to 100. According to our value, Python identify which type of variable it is. अगर हमने यहाँ 100 लिखा है तो x यहाँ पे किस टाइप का हो जाएगा, इंटीजर. अब अगर हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू पाइथन, तो दैट टाइम x यहाँ पे किस टाइप का हो गया है, स्ट्रिंग टाइप का. ओके, तो यहाँ हमें किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू वैल्यू पाइथन उस वेरिएबल को उस टाइप का डिसाइड कर लेगा रन टाइम पे. तो यहाँ पे पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत सिंपल और इजी है. So now let's talk about some important rules when we write a identifier or variable name. So variable name must start with a letter or the underscore. We can write a variable name with the letters and the underscore only. It does not start with a number, or any special symbols are not allowed. It is a case sensitive because
लाइक अगर हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया है जिसका नेम है एरिया और एक वेरिएबल लिया है एरिया, दे बोथ आर डिफरेंट बिकॉज पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट एरिया कैपिटल लेटर में है, सेकंड एरिया यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, तो दे ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल, नॉट द सेम वेरिएबल। Next rule is that when we declare the variable, no reserved words are allowed. The reserved words are a special word and they have their own specific meaning, so that when we use the variable, we can't use the keywords or reserved word like that कि हमारे पास कोई कीवर्ड है क्लास, तो हम इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते क्लास इज 10। अब सपोज करिए कि मेरे पास एक वेरिएबल रिजर्व वर्ड है इफ़ को मैं इस तरह से यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकती, क्योंकि क्लास इफ फॉर वाइल all are the keywords and keywords are not treated as a identifier, so they are not allowed to use the declare as a variable. So there are some rules. First, they are does not start with any number and special symbols are not allowed. It is a case sensitive, so two different things are treated in a Python, and reserved words are not allowed. In this example, the first is a my name and age is a valid. Why it is valid? Because it is a start with the alphabets and it contain the underscore, and it is start with alphabets and it have the numeric value, but it does not start with the numeric value, that's why it is a valid. But second one is not valid because it start with a number and numbers से हमारा कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होगा। स्पेशल सिंबल्स हमारे उसमें नहीं आ सकते, सिर्फ अंडर स्कोर आ सकता है, दैट्स वाई ये भी यहाँ पे इनवैलिड आइडेंटिफायर है। सो व्हेन वी वांट टू डिक्लेयर ए मल्टीपल वेरिएबल, लाइक हमारे पास सिमिलर टाइप की कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वी कैन डिक्लेयर ABC इक्वल्स टू 1 2 3। तो इन दिस एग्जांपल हमारे पास A की वैल्यू ट्रीट की जाएगी 1, B की वैल्यू ट्रीट की जाएगी 2 और C की वैल्यू ट्रीट की जाएगी 3। तो हमने सिंगल लाइन में 3 वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। नाउ if we want to assign same value to multiple variables, in the above example here we see here there are 3 variables but all 3 variables have a different values, तीनों वेरिएबल्स में यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू असाइन की गई है। बट इफ़ यू वांट टू असाइन अ सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल देन वी कैन assign like that A equals to B equals to C. So here value is the same but the variable name is different. First time A is assigned A equals to 100, B equals to 100 and 100 is assigned to C. So here are 3 multiple variable but the same value. Next is the Python is a dynamically type, which means in a Python we can use the same variable name but a different values. So this is the dynamically typed. Suppose that in this example we have a x equals to 100, x यहाँ पे 100 है। अब x फर्स्ट टाइम यहाँ पे किस तरह की वैल्यू ले रहा है, इंटीजर, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट इज द x इक्वल्स टू मीनाक्षी, तो x यहाँ पे अब किस तरह की वैल्यू ले रहा है, स्ट्रिंग। तो दिस इज प्रोसेस इज नोन एज अ डायनेमिकली टाइप्ड।
which means variable name same but the values are the different. According to the value Python gives treated the variable type. So x is right now is a integer type, and now x is considered as a string type. So for more updates and more coding related problems, subscribe our channel Dr. Codecraft. Thank you all.